The 2 days have been extremely informative, focusing on largely on the first day, first morning, on the constitution, appointment, selection process, as well as the infrastructure, staffing, and other matters related to the NHRC. The inadequacies of the legislation which governs them, and this was testified also with a number of practical examples, including people who had served in the NHRC as deemed members like Dr. Moinigiri. One of the powerful statements made in that session was that the deemed members of the NHRC considered themselves as second-class, ornamental deemed members of the NHRC. This was the exact word used by Dr. Moinigiri. It was shocking to hear that after 20 years the NHRC did not have a position on death penalty. This was also something that was shockingly mentioned in the first session. The sessions thereafter went into thematic engagements, looking into issues of torture, looking into issues of extrajudicial killings, looking into all these experiences from states such as Kashmir, states such as Northeast, looking at experiences from West Bengal, from Chhattisgarh, from the border areas of Tamil Nadu and Karnataka, a variety of experiences, but focusing on torture, focusing on extrajudicial killings, and therefore saying how the complaints handling program of the NHRC had failed. Significant, therefore, was that it was more of a compensation delivering mechanism rather than something that was holding the state accountable. This was the sum and substance of all those sessions that we made. Shocking, though, that many people who had approached the NHRC found themselves forced to go back to the Supreme Court 10 years later and then get orders from the Supreme Court, which perhaps also forced the NHRC to visit Manipur after 13 years of fasting of Irom Sharmila, and a delivery of a judgment in the NHRC on the extrajudicial killings in Manipur, which now is creating hope from people to move from the NHRC to the Supreme Court. This was the general feeling that we got in that session. From there, yesterday we moved on to a powerful session on human rights defenders, showing that the refrain from the first day till yesterday was, throughout in the last 10 to 15 years, the attacks have been on defenders. Defenders working with homeless, defenders working with women, defenders working on torture issues, defenders working on gender issues, a variety of defenders who are forced to follow up the false cases registered against them and spending their time in courts adjudicating those cases against them. And although the NHRC has constituted a focal point on HRDs for the last 3 years, 4 years, and although that person is an effective person within the limitations of his or her functioning, we found that they were not able to match to the challenges that were being posed on the HRD community largely. Maximum delivery on HRD matters was that they will hear the police, get their opinions, close the case. No special directions to assist the victim HRD in her or his pursuit of justice. From human rights defenders, we moved on to thematic concerns on communalism. An excellent testimony from Gujarat telling us the creativity at that point of time within the commission to be able to use various provisions of the existing Protection of Human Rights Act, but also followed thereafter, after some years of action on that area, to ensure that nothing was being followed up
by the NHRC, which had been actually initiated by the NHRC. Point to be made there was that a monitoring committee for the first time appointed by the NHRC in Gujarat, which included a civil society member, it has not happened anywhere else. Responses came from Orissa in terms of examples from the Kandhamal cases, from Mangalore, and we moved on to women's rights and the response of the NHRC to women's rights issues. We moved on to tribal rights and responses. All these were Pat and Dalit issues and the NHRC, all these to indicate that the complaints handling program of the NHRC in terms of these thematic concerns had also followed. The Dalit presentation indicated a study made of a few 200 cases, indicating that only in about 9 cases the Commission had actually delivered, and in all the other cases the Commission had not delivered the way it should have delivered. The mining issue was pointed out at length, and that is where we completed the day yesterday. It has been a tough time, particularly very tough for victims who are deposing here, because it is very difficult for victims who deposed here to be able to, in their presentations, differentiate and say, this part of my presentation relates to the concerns of the NHRC, because victims narrate stories and victims narrate their hardships suffered. I think this was the last 2 days in the 5 minutes that I was asked to do it. Thank you. बहुत ही संक्षिप्त में हिंदी में जो कल और परसों 2 दिन में जो कुछ यहाँ पर हुआ है, जैसे कि अभी हेनरी जी ने बताया कि पहले सेशन में कल हमारे बहुत महत्वपूर्ण वक्ता संविधान के एक्सपर्ट हेनरी, प्रशांत भूषण, मोहिनी गिरी, YSR मूर्ति, माया दारूवाला, मुरली, कॉलिन, हर्ष मंदर, अरविंद नारायण, ये हमारा कल का पहला सेशन था, जिसमें एक तरह का फ्रेमवर्क, एक तरह का फॉर्मेट इस IPT का उभरा, और जो मुद्दे आगे आने वाले थे उन सारे मुद्दों पे NHRC का अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेके, उसकी स्वतंत्रता, चयन किस तरह से होता है, किस तरह से छानबीन NHRC कर रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस सब पे पहले सेशन में बात हुई। दूसरे सेशन में जो कि टॉर्चर, बहुत ही हैवी, काफी भारी सेशन था, जिसमें टॉर्चर, यातना वाला मेन मुद्दा था, कस्टोडियल डेथ, पुलिस की कस्टडी में जो मौतें हो जाती हैं, और NHRC का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या इस पर रिस्पॉन्स रहा है। निचोड़ जो उसका निकला कि जो कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स होता है मानवाधिकार आयोग का, ये केवल मुआवजा देने तक सीमित है, और टॉर्चर की बहुत से टेस्टिमनी, बहुत से लोगों ने आके अपनी कहानी बताई। मणिपुर का इशू आया कि 20 साल बाद NHRC की टीम मणिपुर गई पहली बार, और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ की बहुत सी लोगों ने अपनी कहानियां यहाँ पर बताई कि किस तरह से टॉर्चर के मुद्दे पर NHRC अभी तक एकदम लगभग शांत है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जो रक्षक हैं मानवाधिकारों के, ये बहुत डेंस सेशन था, और एक बड़ा मुद्दा जो कई समय से लोग बात भी कर रहे हैं कि बहुत से लोग, एक बात सामने आई कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं। इतने लोग काम कर रहे हैं कि एक को तो विक्टिम कहते हैं, लेकिन कितने डिफेंडर्स इस प्रोसेस में खुद विक्टिम हो गए, सैकड़ों केसेस उन पे चल रहे हैं। कुदान कुलाम का मामला यहाँ पर आया, देश के अलग अलग, मणिपुर में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़, हिमांशु जी को अपना आश्रम छोड़ के आना पड़ा, कितने सारे जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, चाहे वो आतंकवाद के नाम पे जिस तरह से आप लोगों को मार रहे हैं, या आतंकवाद है किसी बम ब्लास्ट के बाद, बम विस्फोट जब होता है उसके बाद जिस तरह से खास समुदाय के लोगों को शक किया जाता है, तुरंत उनको उठाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है, ये सारी बातें इसमें आई, और उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं। और अब आपको केवल आतंकवाद से जुड़े मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, अगर आप किसी विकास के किसी मॉडल से भी सहमत नहीं है, तो आपको लगभग उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जो पहले ये किया जाता है कि अब कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की पूरी ट्रेजेक्ट्री, कितने जिस तरह के अलग अलग विविध क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, वो सामने आई। सांप्रदायिकता वाला जो मामला है, जिसमें बाटला हाउस, हिंदी शायद बोलना भूल गए, बाटला हाउस का एक बहुत ही मूविंग टेस्टिमनी थी यहाँ पे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके एक रिश्तेदार ने अपनी कहानी बताई। बाटला हाउस शायद वो काला धब्बा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इतिहास में, जबकि
हम लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने जाके धरना देना पड़ा, क्योंकि मानवाधिकार ने पुलिस का काम किया और पुलिस की रिपोर्ट को आधार मानते ये बोला कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत नहीं, पुलिस की रिपोर्ट सही है। उसका मतलब यही होता है। गुजरात के केसेस आए, उड़ीसा, बैंगलोर, उसके बाद दलित के मुद्दों पे, अनटचेबिलिटी के मुद्दे पे, महिला प्रथा के प्रति क्या रवैया एनएचआरसी का रहा है, ये सारी बातें कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ विक्टिम्स सामने लाए हैं। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, जो टेस्टिमनी, उसमें बहुत ही मूविंग टेस्टिमनी थी, बहुत ही जिसको कहते हैं दहला देने वाली, यहाँ पर सामने आई है, लेकिन एनएचआरसी को वो दिखता नहीं है। छत्तीसगढ़ के कुछ केसेस आए, हिमांशु जी यहाँ पर कल बोलते बोलते रो पड़े। सोनी सूरी हमारे साथ आज हैं, बोलेंगी। सोनी सूरी, लिंगाराम दोनों आज यहाँ पर उपस्थित हैं और वो आपसे वही उसी बात को थोड़ा आगे ले जाएंगे। और कल का अंतिम सेशन माइनिंग वाला था कि माइनिंग को लेके जिस तरह से लोगों का चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे पर्यावरण को खतरा हो, चाहे लोगों के मूल अधिकार और जीने का अधिकार और जीविका का अधिकार पर हमला हो रहा हो, एनएचआरसी किस तरह से बहुत लंबे समय से इस पर चुप्पी साधी है। तो ये कल का अब तक हम जहाँ पर हैं ये उसका संक्षिप्त में वर्णन है। और इसके बाद सुकृति आज के बारे में बताएंगी और आज की। थैंक यू हर्ष एंड थैंक यू एंडी सर। अभी हम लोग हमारा इस दिन का पहला सेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है एनवायरनमेंट, हाउसिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एनएचआरसी। तो इसमें हमारा मैं स्टार्ट इसी बात से करना चाहूँगी कि आज का दिन है, आज के ज़माने का जो दिन है, जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण का जो हत्या हो रहा है हमारे पूरे देश में, हर जगह देखा जा रहा है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अर्बन हाउसिंग से लेकर कोस्टल एरिया इंक्रोचमेंट, हर चीज़ में ये देखा जा रहा है। तो why does a vibrant Gujarat or why does India shining have to be on the cost of only a certain people from a certain background, from a certain section? This we have to really question. And with regards to the response of NHRC also, it is very clear. We throughout the session हमको इसमें और मतलब गहराई से यही बात पता चलेगी कि NHRC, because it is part of the state machinery, how independent can it be in dealing with these issues? इस सेशन को हमने ब्रेकअप किया है तीन पहला तो एक ओवरऑल सेक्शन है